Good morning, good morning, good morning to all of you. Join fast. Today we are going to start with cash book illustrations. So before starting today's session, first quickly revise your basic rules of accounts. So basic rules of accounts, traditional approach and modern approach. It is divided in two parts. Traditional approach talks about debit the debtor, credit the creditor for personal rule, and debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Then you have asset debit balance, liability credit balance, expenses debit, income credit, and capital account credit balance. Asset minus liability is equal to capital, and income minus expenses is equal to profit. Expense minus income is equal to loss. So beta, we have quickly revised all basic rules of accounts. Now we are going to start with first some ledger accounts. Quickly revise all ledger accounts. Chalo. So now let's start with your ledger accounts pro formas. Chalo, ledger accounts. Let's understand ledger accounts. First, we will see debtors account. Debtors account, debit plus credit minus. Quickly revise this. Two balance brought down. Every one of you, please जोर जोर से बोलना है आपको. स्पीक लाउडली. टू सेल्स के बाद क्या आएगा सर? इट्स बाय कैश और बैंक. इट इज कलेक्शन. बाय सेल्स रिटर्न के बाद बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेट्स, बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल के बाद टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हियर, and then by balance carried down, sir. Yes, sir. I remember this pro forma. Creditors account pro forma. Creditors account के pro forma में by balance brought down, by purchases to cash. This is credit purchase. When you are paying cash, your credit plus रहेगा मेरा बताना. Credit plus debit minus to cash, to discount received, to purchase return, to deficiency, to bills payable, to balance carried down, and by bills payable dishonor. Expenses pro forma. Expenses debit plus credit minus, to prepaid, by prepaid, by payable, to payable, to cash, by P&L. Yes, sir. We can recall it. Income, चलो याद करो. डेबिट टू रिसीवेबल, बाय रिसीवेबल, बाय रिसीव्ड इन एडवांस, टू रिसीव्ड इन एडवांस, बाय कैश, टू P&L. Yes, sir. Recalled. Fixed asset account, sir. Debit plus credit minus, to balance brought down, to cash, by depreciation, by cash at selling price, by loss, to profit, by balance carried down. Daily small steps will give you result. Daily recalling. So this is not a question of one day. छोटी स्टेप्स आपको कहां पे लेके जाएगी? आपके मंजिल तक पहुंचाने वाली है. ओके बेटा, ये ध्यान में रखो. डेली लेक्चर्स को मिस नहीं करना है. जो बच्चा भी अकाउंटेंसी का लेक्चर मेरा रोज सुनेगा उसका स्कोर 80 प्लस जाएगा और फॉलो करेगा. सुनना नहीं है सिर्फ. डोंट रिकॉल, don't only watch my session, try to recall the session. very important. चलो सर एक बार क्विकली आप बिना देखे प्रोफॉर्मास को कैसे याद करना है सर? ये तो आपने लिख के बताया. You have told us to write this. Yes, we recalled it, but how to recall it within 1 minute? Okay, so sir आप एक बार quickly बताओ कैसे याद करना है. Ledger account debit, debtor debit plus credit minus, to balance brought down, to sales by cash, by sales return, by discount, by bad debts, by bills receivable, to bills receivable dishonor, and by balance carried down. Sorry, creditors account credit plus debit minus, by balance brought down, by purchases to cash, to purchase return, to discount received, to deficiency,
Two bills payable, buy bills payable dishonor, and two balance carried down. Expenses two prepaid, buy prepaid, niche, buy prepaid, buy payable, two payable, two cash, buy P&L. Yes, sir, we can recall it. Income, two receivable, buy received in advance, two received in advance, buy cash, two P&L. Okay, sir, we recalled it. Fixed asset. Debit plus credit minus, two balance brought down, two cash, buy depreciation, buy cash, selling price, then buy loss, to profit, and buy balance carried down. थोड़ी थोड़ी दिन में पूरा रिकॉल हो जाएगा. डोंट वरी, रोज करना है रिकॉलिंग, अपने आप याद होगा. सर, वी आर फाइंडिंग फर्स्ट टाइम इट्स डिफिकल्ट, बट व्हेन यू रिवाइज इट ऑन डेली बेसिस यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस लेजर अकाउंट्स. ओके, सो अंडरस्टूड हाउ टू रिकॉल दिस टेक्निक. मस्त है ना एकदम. चलो चलो चलो. यस, बताओ जल्दी से. हाउ मेनी ऑफ यू राइट डाउन इट इन कमेंट सेक्शन कि सर यस आई कैन रिकॉल एनी प्रोफॉर्मा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कॉन्फिडेंस while recalling the proforma. चलो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है while recalling all proformas. Okay. Say good morning बेटा. Good morning, good morning, good morning. Many of you have not written. सर आज कैश बुक है ना? हाँ जी बेटा, कैश बुक छे. आज कैश बुक छे. यस, चलो बताओ जल्दी से. सर नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस, आई कैन रिकॉल एनी प्रोफॉर्मा, बट नॉट एट योर स्पीड. कैसे आएगा ना स्पीड? इट विल टेक टाइम ना बेटा. हाँ, आप डायरेक्टली इफ यू वांट टू बीट की रॉक को मैं जाके मसल बताऊं तो होगा नहीं ना बेटा. यस, ऐसा कैसा होगा? वो इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहा है और आपने 1-1.5 साल जिम चालू किया रहेगा एंड इमीडिएटली यू आर टेलिंग मैं अभी रॉक को कॉम्पीट करूंगा. हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, बट एटलीस्ट यू कैन डू रेगुलर एक्सरसाइज. Yes, very good, very good. Yes, sir. I can recall all journal entries and all here. अरे हाँ, we have completed till कितना journal entries? We have completed till. चलो बताओ. चलो आज one question. आज मैं थोड़ा सा आपको questions देता हूँ. Yes, today I want to see your knowledge. चलो एक example. Write down. This example. Note down in your ledger accounts. ठीक है? Example note down in your ledgers. Now I think your ledgers you have you skip कितने pages? 4-5 pages ना? आपने 4-5 pages को skip भी किया था in ledger. So there you can write this example. चलो one example. Up to 12. ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं. टुडेज मॉर्निंग, लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर इट. सी बेटा, एफडी ऑफ रुपीज 5 lakhs. कितने की एफडी आपकी? 5 lakhs एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1st of April. न्यू एफडी 1st November 3 lakhs rupees at the rate of 14% per annum. ठीक है? Received interest till today rupees 80,000. Open. Yes. Prepare interest इनकम अकाउंट. चलो इनकम अकाउंट बोलो. कौन देता है सबसे तेज आंसर? लेट्स चेक इट. यस सर.
I explained only 12 journal entries. Today I'm going to explain eight more entries. And today we are going to finish with cash book and we'll start with our theory units. चलो फास्ट, जिसका पहला आंसर आएगा इमीडिएटली आई विल स्टार्ट. चलो चलो. So interest account. See, my profit to P&L. To P&L will be 5 lakhs for full year, 12% plus 3 lakhs into 14%, 11, 12, 1, 2, 3, 5 months from November to March. $60,000, 17,500. So total will be 77,500. By cash received 80,000. And therefore to received in advance, $2,500. Received in advance is 2,500. चलो लेट्स चेक इट. चलो चेक करो. किसका करेक्ट आया? नॉट अ सिंगल स्टूडेंट. $2,500. टू बैंक कौन लिखता है रे? टू बैंक सक्षम टू बैंक है क्या बेटा? प्रोफॉर्मा क्या इनकम का? फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? अप्रैल टू मार्च. टू बैंक कैसे लिखते हो रे? ओम गुप्ता. वेरी गुड नाजिया. वेरी गुड. पेबल
सौरव, अरे हाउ इज इट पेएबल यार? इनकम कभी पेएबल होगा क्या? इट्स आइदर रिसीव्ड इन एडवांस और रिसीवेबल। प्रोफॉर्मास को याद करो रे, प्रोफॉर्मास को याद करो। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एग्जाम्पल 2, टुडे इनकम का प्रोफॉर्मा दे रहा हूं, ठीक है? देखो, ध्यान देना। 2021 का रिसीवेबल ₹10,000। योर टू फाइनेंशियल ईयर। चलो मैं आपको कैलेंडर ईयर देता हूं, चलो सिंपल कैलेंडर ईयर है, ऊपर लिख के रखना दिस इज फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। अभी मैं सिंपल देता हूं। कैलेंडर ईयर इज एंडिंग 21 का रिसीवेबल, यू आर इन 2022। एज्यूम यू आर इन 2022। एज्यूम 221 का रिसीवेबल 10,000, 22 में रिसीव्ड ₹1,00,000 related to 2023 5,000 and receivable 15,000 related to 22, sorry, related to 21 rupees 3,000। चलो सॉल्व। कैलेंडर ईयर 2022, रिसीवेबल 10,000, रिसीव्ड 10,000, चलो देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय ये सॉल्व कर पा रहे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रिपेयर प्रो फॉर्मा। चौधरी जी, प्लीज वॉच वीडियोस ऑफ फर्स्ट 6 days इफ दिस इज योर फर्स्ट डे। पहला दिन होगा तो आई कांट हेल्प यू आउट। आप जल्दी से जल्दी पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए। वो लिख रहे कि सर मुझे नहीं पता था यहाँ पे हिंदी भी बताया जाता है। यस बेटा, दिस इज मिक्स बैच, हिंदी प्लस इंग्लिश। इन इंग्लिश वी आर टेकिंग सेशन एंड हिंदी में रिवीजन। Some South Indian students may find it difficult, but South Indian students, it might happen after 1 year, you can easily, speak in Hindi. It's possible. In 2016, I conducted some sessions in Bangalore. So I know how much difficult to understand Hindi for Bangalore students. सर इनकम अकाउंट ही बनाएंगे ना? सर इनकम अकाउंट ही है, दिस इज इनकम अकाउंट। See beta, now how to solve this? Year to year, to income receivable of last year 2021, it is 10,000. Understand? So we have finished with this 2021 10,000. Now by cash, now you are not aware 21 का कितना,
22 का कितना, 23 का कितना. So by cash, you have written 1 lakh. By cash is 1 lakh. And out of that, 5,000, change color, 5,000 is of 23. So मैं इधर 23, I will write 5,000 और इसको कलर करता हूं 23 by yellow color. So here, but 23 is received in advance. So this is not income or during the year. 5,000, which is related to 2023. So this is closing balance. So 23 का मेरा closing 5,000 है. I received it in 2022, but related to 23. So 2 received in advance. Now, by receivable, this is very important ledger. Huh? See, by receivable closing is 15,000. Out of that, 21 का 3,000, तो 22 का 22,000. Sorry, 12,000. See, 21 का 21 का गिवन ना रे, गिवन 21 का गिवन इज गिवन ना बेटा 3,000. Okay, so tell me 21 का 10,000 receivable था. You received so still receivable 3,000. तो you received कितना बेटा 7,000. ईयर टू ईयर मैच करना है, ईयर टू ईयर मैच करना है. And what is the income for 2022? Now change the color. So 2022, first 7,000 plus 5,000, 12,000. So 12,000 हुआ, तो this is balancing figure 88,000 इधर. So total is 1 lakh ना, total is 1 lakh. तो 22 का कितना हुआ 88,000. So 88,000 में से बेटा, if you understand these things, your accounting will be perfect year to year. 2022 का 88,000 plus 22 का 12,000. So how much income during the year to IND or to P&L? P&L you will record 2022 88 plus 12. See, this is 1 lakh. Year to year matching. So your green pen, green will be your year. Green year is 2021. Then you have yellow color for 2023, and you have year to year pink color for 2022. So year to year you have to match. ठीक है, और यही प्रो फॉर्मा है. देखो, दिस इज लास्ट ईयर, ये करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर, this is next year. Sorry, this is only current year. Sorry, this is only current year. Last year, current year, next year. By cash any year. And receivable only last year and current year. No received in advance opening. No received in advance opening in this question. So ledger will help you out to bifurcate and solve it. Okay? एक दूं क्या आपको? You want to try one more? Yes or no? How many of you got the answer? Tell me. 1,15,000 and 1,15,000. Please solve this example number 2 minimum 2 to 3 times. Once you have grip over this question, year to year match karna, so you will find it very simple. Year to year match karna, so ledger is very simple for you. Okay? Understood the concept? ठीक है, it will take time. Don't worry, it will take time. By doing it for 3 to 4 times, year to year को match करना है. Should I give you one more to try? बताओ जल्दी से.
नहीं मनीषा, ये क्वेश्चंस जब तक करेक्ट आंसर नहीं देते तब तक सॉल्व करेंगे तो बेटा रात हो जाएगी. नथिंग, ये प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट, यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन. ओके, आई कांट हेल्प यू एवरी टाइम. ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफिकल्ट है, सो डोंट थिंक कि आई विल डू दिस इन द फर्स्ट वन. नो, it needs practice. ये problems are very high level questions. After understanding later, see, in on first day I have not taught you these things. Why I not taught you these things? Because I know step by step understanding बढ़ता जाएगा. एक्सरसाइज करने से बढ़ता जाता है ना, जैसे वैसा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. एक ही दिन में आप लोगों को नहीं आने वाला था. नाउ आई नो मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजी वे. ईयर टू ईयर मैच करना. इंडिया के बच्चे मुझे पता है, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड आई नो यू आर नेवर गोइंग टू गिव अप. ओके, ये आया ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन देखना है. लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट. चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूं. देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपको. सॉल्व दिस क्वेश्चन. Solve this question. During 2020, subscription received in cash 42,000. It includes 1,600 for 2019, 600 for 21, and 3,000 is still received for 2020. Has still to be received for 2020. Let's see. चलो ठीक है, नहीं आया, it's okay. You can do the practice. You write this example in your leisure. चलो जल्दी से example लिख लो. During 20, subscription received in cash 42,000. नहीं होगा, दोबारा नहीं बता पाऊंगा बेटा. प्लीज वॉच सेशन वंस अगेन आफ्टर क्लास. वापस से एक बार देख लेना. इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं आ पा रहा है बेटा, वी हैव टू कवर मैक्सिमम सिलेबस. तो इतना टाइम नहीं रहता है सीए में. सीए कोर्स में आपको बहुत ज्यादा पंक्चुअल भी रहना पड़ेगा एंड यू नो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना भी पड़ेगा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन वॉच माय सेशन वंस अगेन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक છે? पेज नंबर नहीं बेटा, राइट डाउन दिस एग्जाम्पल. यस, ट्राई कीजिए, डोंट वरी. इफ यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर इट्स ओके. इफ यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर डोंट वरी, इट्स ओके. एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. ठीक है, टेक योर ओन टाइम, 2 minutes, 3 minutes. Open subscription account. This is income account. Now you are in year 2020. In this question, you are in year 2020. You have 19 ka, you have 21 ka. You just note down all years. Then you will find it's very simple. Very good, Fatima. $1,600 for 2019. चलो अभी देखो. If I open, चलो इधर ओपन करता हूं. Subscription account. Now how to solve? Subscription is income.
थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, बाय कैश आफ्टर 2 लाइन्स, बाय कैश 42,000. Now what is the breakup? 2019, 2020, 2021. करेक्ट है. 19 का कितना है? 1600. 21 का कितना है? 600. सो 20 का कितना हुआ? इट्स अ इनर बैलेंसिंग फिगर. इनर बैलेंसिंग फिगर 42,000 minus 1600 minus 600, 39,800. Okay, whatever information is given, first note down this. Then 3,000 is still received, to be received. Still to be received, sir, by receivable. 20 का कितना? 3,000. चलो ईयर टू ईयर मैच करेंगे. नाउ फर्स्ट सर 19 1600. So it is receivable na on first day. So this is receivable. 2019 का receivable था 1600 and therefore we received it. Year to year match किया. Yes, very simple. Then 21. 21 is beta 600 you received in advance. So debit side में 2 received in advance 2021 600 21. And what is my income during the year? Income is 39,800 and 3,000, that is 20. 20 is my income to P&L. How much? 39,800 plus 3,000, 42,800. So year to year match करना है. Year to year match करना है. Simple छे. Okay, do practice. Do practice. These 2 questions and 3 questions. These 2-3 questions you solve it for minimum 3 to 4 times. Yes, very good. Very good. सौरव पूछ रहा है. ठीक है, नोट डाउन दिस. सब्सक्रिप्शन अकाउंट चलो. नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन. यस, वेरी गुड. नहीं बेटा, अभी 1 मोर क्वेश्चन तो अपना सिलेबस होगा क्या? ठीक है, चलो एक इच्छा है तो एक लास्ट क्वेश्चन एक्सपेंसेस का देता हूं. चलो डू. एक्चुअली ईयर टू ईयर की जरूरत नहीं है इधर. इधर जस्ट यू प्रिपेयर यूर एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, इधर ईयर टू ईयर डोंट मैच इट. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन. दिस इज नॉट ईयर टू ईयर यू आर गोइंग टू मैच इट. Just write down the pro forma and get the answer. Year to year, don't think year to year in this question. So write down next example. Write down this example and tell me the answer. Ledgers are important. Ledgers बहुत जरूरी है. Beta, example 2, if we have 10,000 receivable and we receive 1 lakh, then why not adjust last year? No, because in question it is given in the closing still receivable. Okay, in my that question I have given still receivable. इसलिए सौरव वो प्रॉब्लम में मैंने दिया हुआ था कि स्टिल रिसीवेबल है करके, इसलिए स्टिल रिसीवेबल. अभी मुझे वो शीट मिलेगा नहीं.
हरे हर्ष पटेल, ऐसे क्वेश्चन को ओरली कैसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं, पर बेटा एग्जाम में सेकंड इफेक्ट भी देना होता है, बैलेंस शीट में, इसमें एनपीओ में आपको समझ जाएगा, डोंट वरी, एनपीओ में आपको समझ जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में another faculty will tell you where to post the second effect. NPO normally I'm not taking. देखो फटाफट। वेरी गुड। आंसर है 23,200। नाउ सी, दिस इज टू कैश, हाँ या ना? टू कैश आएगा। अनपेड, अनपेड मतलब ओपनिंग पेएबल, ओपनिंग प्रीपेड, अनपेड क्लोजिंग पेएबल, and this is closing prepaid. No need of year to year, salary to cash, ईयर टू ईयर है ही नहीं है। टू प्रीपेड, ओपनिंग में 400। सर प्रोफॉर्मा वर्क्स, कितना इजी हो गया प्रोफॉर्मा के वजह से। टू पेएबल 1800, बाय प्रीपेड 600, बाय पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर। $23,200। यस, तो मस्त है एकदम। प्रोफॉर्मा, if proformas you know proforma in detail, then beta questions are very simple. Now two prepaid means what? Opening balance sheet, by payable opening balance sheet liability side, closing balance sheet liability side, closing balance sheet asset side, two cash, cash book में credit side payment, and by P&L, P&L चा debit ला to salary. See, accrual concept versus cash concept. You paid cash, but it is not equal to expenses during the year. This is what is called during the year. And this is called payment. Expenses paid and expenses incurred are two different concepts according to accrual concept of accounting. Understood? Accrual concept क्या बोलता है? Accrual concept यही बोलता है कि paid and accrued are different. बेटा, I know in today's session, you found slightly difficult, पर यही तो सीए कोर्स है। वेलकम टू सीए कोर्स। सर, what is our duties and responsibilities? Now after this session, try to solve this question once again. Take some imaginary figures, ask to your friend who is watching my sessions regularly, ask him some questions, otherwise I will give you some questions as homework and you can do in next session। आप लोग उसको कंप्लीट करके आना। ओके, ठीक है। सो ये समझ में आया प्रोफॉर्मास, एक्रूअल वर्सेस पेमेंट, लेजर्स क्या होता है? यस बेटा, सी, फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, दिस टॉपिक्स आर बेटा बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक का रिश्ता कोई और टॉपिक के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वी स्टडीड एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर इन 5th स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। बट बेटा, दिस 5th स्टैंडर्ड बेस now you required in
foundation maths also, and even in your 10th standard maths. So base is very important. So ledger ka base you will need not only at foundation level, it will be needed in your intermediate level, final level, in your real life also. So ledger पता होना बहुत जरूरी है. How ledger you can reflect your ledger on your screen. आपको visualize your screen कि सर कैसे बताते हैं डेबिट credit, and how you are going to visualize this by looking into ledger. First decide whether it is expenses, income, capital, liability, asset, and then debit plus or credit plus. Very simple. सर थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्यों लगेगा ये टाइम? बिकॉज फर्स्ट थिंग में यू नेवर अंडरस्टैंड 100%. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ओके, ठीक है. सबको डिफिकल्ट जा रहा है, आई नो डिफिकल्ट है, एंड आई कांट इंटरेक्ट विथ यू. तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है दैट आई डोंट नो. So I will give you some examples. If you solve it correctly, then better you understood it perfectly. Sir, what to do if we don't understand? Don't worry. Do same question again and again. It's a basic fundamental. If you find maths difficult, what you have to do? Same question again and again. Instead of solving 10 questions, first take a grip on 3 questions, have conceptual clarity over these 3 questions, and then solve n number of questions. Okay? ठीक है? क्लियर छे? दे दू 2-3 होमवर्क? दे दू 2-3 होमवर्क बेटा? 2-3 क्वेश्चंस. चलो लिखो. Some examples. Salary of 2000, calendar year लेते हैं. Okay, so it will be easy. 2022 is rupees 50,000. Do one thing, is rupees 5,000 per month. Okay, salary of 2023 rupees 6,000 per month. If salary is paid in next month, then open salary account for 2023. Okay. Next example. Rent paid in 2023 rupees 1 lakh. Out of this 2022 का 5,000 and 2024 का 10,000. Rent payable for 2023 rupees 8,000. Rupees 8,000. Prepare rent account for 2023. Okay, bas solve these 2 questions as homework. In next session we are going to see the answer. ठीक है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना. I'll take a screenshot.
यस, यस बेटा, एनपीओ में आएगा, लेजर्स में भी आ सकता है। चलो, do this homework today. Now let's start with our cash book questions. Cash book के questions करो चलो फास्ट। इजी लग रहा है अभी आपको लेजर? आर यू फाइंडिंग इट्स इंटरेस्टिंग? और 12th स्टैंडर्ड इजी था? विच वन इज इजी? 12th इजी था या फाउंडेशन? वेलकम टू फाउंडेशन। लॉजिकल है रे बेटा। चलो, कैश बुक के इलस्ट्रेशंस में आ जाओ फास्ट। कैश बुक के इलस्ट्रेशंस में we finished cash book in the last session and I hope you solved all illustrations. Illustration 1 in 2.77. You solved na beta all these illustrations? It's easy now. 12th में किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया होगा आपको। Tanisha is saying the foundation is easy with ICI faculty. Very good beta. चलो, illustration come to page number and take a screenshot after that. So line by line जाएंगे. Yes, first one. 1st January 1, you have open your question beta. Cash in hand. This is simple cash book. So what are columns? See, columns are date, receipt on the debit side, LF. Please note down all these things after the class. हाँ बेटा, please आप लोग pause करके draw कर लेना after the class. Rupees. So on the debit side, yes, you are clear. Date, receipt, LF, rupees. Date, payment, LF and rupees. So ये columns है आपके, याद कर लो columns. Date, cash book and cash account are same. Date, receipt, LF, rupees, date, payment, LF, rupees. चलो, 1st January, cash in hand. This is opening balance. So two balance brought down. Cash in hand. First thing, 1200. You can note down here. It is 1200. It's very simple. Correct है? So cash book करके लिखोगे आप. This is your cash account. This is your cash account. Two balance brought down. Received from Ram. Received मतलब receipt side. Debit plus credit minus. When cash comes in on the debit side, it is an asset. So received from Ram. So entry will be, you can write entry over there. क्या एंट्री लिखोगे? कैश टू राम. तो कैश को क्या किया हमने? डेबिट. सो कैश के डेबिट में वी आर गोइंग टू राइट टू राम 300 रुपीज. सिंपल छे. पेड रेंट. रेंट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंसेस डेबिट. कैश गोज आउट. कैश क्रेडिट. सो रेंट अकाउंट डेबिट. एक्सपेंडिचर टू कैश अकाउंट goes out. Entry will be payment side में buy rent. Buy rent. Payment side पे 30 rupees. Sir, understood, sir. Very good. Sold goods for cash. Cash comes in. Cash account debit. To sales is my income. Cash के debit में to sales. Receipt. So cash to sales. क्या आएगा? Receipt 300. Receipt 300. Paid to शाम. शाम के डेबिट में टू कैश. शाम के डेबिट में टू कैश. So buy
Sham 700. By Sham 700. Sham to cash. Purchase furniture, sir. Furniture comes in asset to cash. So payment credit side. Buy furniture. Buy furniture 200 rupees. Very good. Salary. Salary is paid. Paid salary. Salary to cash. Salary to cash. Salary kharcha. Expenditure. Cash goes out. Buy salary 100. And last one, rent due but not paid. Rent expenditure to rent payable. It's our liability. So rent account debit to rent payable. Entry will be not in cash book. Not in cash book. ठीक है? So now take a total of debit. 1200 plus 300 plus 300, 1800. Credit key 30, 700, 200, 100. So total is 1030. So 1800 minus 1030. Buy balance carried down 770. 770 on 31st Jan. It's a star mark. Balancing figure. Easy che. Screenshot લઈ લો. Take a screenshot. एकदम easy છે sir. Easy beta. Ilu 1. Very simple. Simple cash book. Single column. Single column. आज कंप्लीट करना है. Those students who are not completing their 400 pages book and 100 pages book, sir last में बड़ा पछताओगे. Z category question. ठीक છે. આજે index આપીશું. ઈશાની. Yes beta, I will give you index today. Don't worry. ले लिया स्क्रीनशॉट. कम टू इलू 2. इलस्ट्रेशन 2 में આવી જાઓ. गणेश commence a business. कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम चाहिए. गणेश commence a business with rupees 2000 as capital. 1st April को. 1st April को to capital 2000. He started a business. Cash to capital. लिखो लिखो लिखो. Cash comes in and we have to pay him back. So capital is a personal account. He is our creditor. Cash to capital. We have to pay back his amount. Cash to capital. Yes, sir. Furniture purchase and paid in cash. So now which columns beta? Date, particulars or receipts, LF, discount allowed, rupees, date, payment, LF, discount received, rupees. एकदम easy. Date, receipt, LF, discount allowed rupees, date payment LF, discount received rupees. Okay. चलो अभी क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? बताओ. यस. जर्नल प्रॉपर में बेटा चंद्रा. जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे रेंट ड्यू की एंट्री. यस बेटा. पृथा करीशु. आज कंप्लीट करीशु पेटी कैश बुक. डोंट वरी. फर्नीचर परचेस. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. सर रिसीट है या पेमेंट है? अरे कैश गोज आउट ना.
पेमेंट है, कौन से कॉलम में, डिस्काउंट कॉलम या रुपीज कॉलम? बट ऑब्वियस इट इज नॉट डिस्काउंट, सो इट इज रुपीज. ओके, सो बाय फर्नीचर and amount is 250. Buy furniture 250. Next, purchase goods. Purchase goods to purchases to cash. Purchases to cash. Buy purchases 500. Buy purchases 500. Sold goods for cash. So cash comes in to sales is our income. So बहुत बढ़िया सर, विजुअलाइज करो कैश टू सेल्स. सो कैश के डेबिट में टू सेल्स 950. अरे वाह मेरे शेयर लोग, अभी देखते हैं. पेड कैश टू राम मोहन जी, रिसीवर पेड ना टू कैश, and he allows discount 10 rupees. So discount received है, लिखो एंट्री उधर ही क्वेश्चन पे. राम मोहन अकाउंट डेबिट, रिसीवर टू कैश goes out to discount received is our gain. Amount is 560 and 10. Payment side में by Ram Mohan. No need to write two times by Ram Mohan. No. That's why we prepared discount received column. 560 in rupees column and 10 rupees in discount received column. Easy छे, अरे easy छे के? चलो आज बहुत प्यास लग रही है, पता नहीं. चलिए, रिसीव्ड कॅश फ्रॉम कृष्णा कंपनी. कॅश अकाउंटच्या डेबिटला, डिस्काउंट अलाउडच्या डेबिटला टू कृष्णा अँड कंपनी. व्हेरी सिंपल. कॅश कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी. कैश के डेबिट में टू कृष्णा अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड है, लॉस है. 600 रुपया रुपीज कॉलम, 20 रुपीज डिस्काउंट अलाउड कॉलम. डिस्काउंट अलाउड कॉलम. वेरी सिंपल. अरे हाँ या ना? अच्छा, राम मोहन का डिस्काउंट 5 कर दो इधर. गुड ऑब्जर्वेशन. किसका ऑब्जर्वेशन है रे ये? भूमि तिवारी. भूमि तिवारी, उसी दिन हम लोग डिस्काउंट दे देंगे 5 तारीख को. यस, आईसीआई का थोड़ा नेक्स्ट टाइम वी विल रेक्टिफाई इट. डोंट वरी, वी विल रेक्टिफाई इट. गुड ऑब्जर्वेशन भूमि बेन. मजा आ रहा है आपको? कैश बुक इजी है. ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, जर्नल, लेजर. आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? पेड फॉर पेटी एक्सपेंस. पेटी एक्सपेंसेस 7 जनवरी, 15 रुपीज कैश कॉलम में पेमेंट. पेटी एक्सपेंस टू कैश. पेटी एक्सपेंस टू कैश. Purchases to cash 150. Buy purchases 150. Paid for labor. Labor to cash. Labor to cash. By wages. You can write by wages. Wages to cash. No problem. Paid Ali and Sons. Payment side. Now same transaction. ये पेड तो वेजेस हो गया. अली एंड सन 400 and 8 rupees is discount.
over, remember your debit side total 2000 plus 950 plus 600 3550 minus 250 minus 500 minus 560 minus 15 minus 150 minus 1000 minus 400. I am getting the answer 675. So buy balance carried down 675. You can check here, it is 675. And now you don't have to discount column का totaling. Yes, balancing. Don't balance your discount account. Discount account कभी balance नहीं करते. 2018. Don't balance. Write down on answer. Do not balance. कौन सा column? Discount allowed and discount received. Don't balance. Do not balance. Easy છે. हाँ या ना? हाँ या ना? इलू टू सिंपल છે. You have to write down by using टिक-टिक-जी technique. टिक-टिक-जी technique को यदि आपको यूज करना है, because we are facing better short of time. If you want detail में sessions की टिक-टिक practice also, तो आपको मैं बताऊंगा क्या करना है. Either do by your own, या मैं बता दूंगा आपको करना क्या है. टिक-टिक-जी. I am here explaining you all things in detail. और illustration 2 we have finished with. एकदम easy है. Now come to illustration number 3. बड़ा आप में बहुत पेशेंस है. एकदम ज्यादा पेशेंस है आप में. स्क्रीनशॉट लेना है? चलो स्क्रीनशॉट लो. ले लो ले लो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. अरे मॉड्यूल में भी सेम ही है रे. सो डोंट वरी. मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन अलग होगा तो आपको लिख के दूंगा मैं. Please finish your notebook till Friday. Friday को we are going to start with very difficult chapter, rectification of errors. So please be prepared for all worst things. क्योंकि एक बढ़िया चैप्टर शुरू होने वाला है. On Friday morning. दर्शिका बोल रही है, सर दिस इज नॉट पेशेंस, दिस इज एक्साइटमेंट. बड़ा मैं तो सच में बोलता हूँ, 2 आवर्स के सेशन में व्हेन आई वाज डूइंग माय फाउंडेशन कोर्स, मुझे तो ऐसा होता था अकाउंट्स का सेशन कब होता है भाई, खत्म करो. क्योंकि वो सर सिर्फ अकेले बोलते जाते थे. राइटिंग कुछ नहीं, सिर्फ विजुअलाइज. नो नीड, मतलब ऐसा पीपीडी वगैरह तो कभी नहीं. आई वोंट टेल यू नेम, बट दिस इज वन ऑफ द रिनाउंड, पुणे में क्लासेस थे. और इतना फास्ट कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं ही सीए के लायक नहीं हूं. तो हमें ऐसा लगता था कि सीए कोर्स वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. एवरीवन थिंक्स दैट. बट बेटा व्हेन आई अटेंडेड माय जीजाजी's lecture, he was taking first year BCom. I joined his classes for first year BCom, and then my basics got clear. He was not CA. He was taking BCom classes, but he corrected my entries by giving me a logic of traditional approach. If you ask me, sir, how you developed your accounting? All credit goes to my जीजाजी. मतलब थोड़े दूर के रिश्तेदार थे. So I was afraid कि मेरा CA तो नहीं होगा, at least BCom तो हो जाए. So I joined first year BCom classes. We were only 3 or 4 students in his class. तो he was doing कि बाकी का करते थे. 11, 12 कॉलेज के टीचर थे. So हम 4 लोग थे शायद से.
3 नॉन सीएस एंड 1 सीए करने वाला। अपना बहुत ऐसा एकदम नहीं क्या कि यस ही इज डूइंग सीए, सो वो 3 स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट वगैरह। हाँ, तो at that time, then I joined his classes after 3 months, and then I understood how he pass any entry while teaching. Okay, so how he told us ki how to draw ledger account, always draw from the right to left, and our CA faculty, he never told us these things. So then I left my, foundation classes after 7 to 7 months, and I joined his classes. I told him, "Sir, Jijaji, please tell me something about foundation also." He took some foundation lectures कि उन्होंने ये लिया, but after that he left that foundation कि उनको भी समझ में आया कि बीकॉम और इसमें इसको अकेले को लेके बैठना is very difficult. तो उन्होंने वो प्रोफेशनल लेवल पे कभी सिखाया नहीं, पर he cleared all my basics. Okay. So that's how I develop my accounting. So it's not because of CA faculty, but it's because of, BCom faculty. Okay. यस बेटा, मैंने सब कुछ मेरे इस पे डाल दिया है चैनल में, हार्दिक जी, डोंट वरी। See beta, now we have some students who have attempted May 23. From last 5-6 months, their schedule is like this: sit for minimum 6 to 8 hours other than class timings. And I hope you also have the same schedule, daily 6 to 8 hours. Challenges, sir. संकेत सर साथ में होंगे ना, सीए होने वाला है, डोंट वरी, बट एटलीस्ट ट्राई टू सिट फॉर 6 to 8 hours डेली बेसिस पे. डू यूर रिविजन्स रेगुलरली, मॉर्निंग 5 o'clock to 10 o'clock. देखो आपका स्केड्यूल कैसे होना चाहिए, मॉर्निंग 5 o'clock. ओके, 5 बजे उठ जाओ बेटा. क्या हुआ रे इधर? हाँ, 5 बजे उठ जाओ बेटा. 5 AM, 5 AM to 6:30, do your law subject in the morning. 6:30 to 7:30, pray timing. Then बेटा your एक 30 minutes का वॉक लीजिए. 30 minutes वॉक, फ्रेश हो जाइए दिन भर में. ठीक है, 8 o'clock को आफ्टर ब्रेकफास्ट, चलो 8 o'clock को बैठो. 8 to 10 डू मैथ्स. ठीक है, मैथ्स कर लीजिए. 10 to 11 ब्रेक. इट्स ओके, ब्रेक लीजिए प्रॉपर. कुछ सॉन्ग्स या जो भी आपको लगता है वो कीजिए. 11 to 4 योर क्लासेस. 4 to 5 ब्रेक. 5 o'clock to 7 o'clock accounts, and 7 o'clock to 8 break, and 8 to 9:30 your eco BCK. No need to go outside. घर के बाहर जाइए भी मत. जो भी स्टडी है ना, मैक्सिमम टाइम यू स्पेंड होल डे एट योर होम. मिनिमम नेक्स्ट 5 months का स्केड्यूल, if you follow this schedule, Sunday take full rest during in first month, then in second month I will tell you कि क्या करना है. But if you follow this schedule consistently, see, you will get the result. Out of 100, only 26 students are going to pass, and 74 students, they are going to fail. We should be in this category. Out of 26 also, 13 students to 15 students, they are intelligent, sir. Out of 100, 15 students are very intelligent. If they join any classes, it doesn't affect their result. They just want push. Okay, वो intelligent है. उनको आप कुछ भी पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, वो खुद से पढ़ते हैं. They can understand concept by their own. And remaining 13 students, उनको संकेत सर की help लगती है. And 74 students,
they never listen Sanket sir also. So now you decide whether you are in this category, 13 students की category or 74 students की category. Follow this schedule regularly. 4 to 5 months, sir, no break at all. Sir, I'm telling you my real story. मेरी दादी, मैंने बताया भी था, मैं एक जगह पे, normally I used to sit on floor. I never sat on बेटा table, chair while doing theory, और bedroom में तो कभी नहीं. Not never on bed. I never studied by sitting on bed. Okay, so compulsory. And accounting में I used to sit on chair. Financial management, theory no, practical subjects. But whenever theory subjects, I always sat on बेटा floor, नीचे बैठता था. And मुझे याद है मेरी मम्मी 2 से 3 बार चाय गर्म करके लाती थी, पर फिर भी मेरा चाय जो था बेटा, आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट. आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट था. एवरेज नहीं बोल सकता हूँ, पर एवरेज के ऊपर एंड इंटेलिजेंस से नीचे बोल सकता हूँ कि एकदम मंद भी नहीं था, एकदम एवरेज भी नहीं था, ऊपर था. बट आई लाइक टू स्टडी बाय माई ओन. मतलब मैं कभी भी मेरे लॉजिक खुद डेवलप करता था इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लासेस. But now you do not have that much time because competition is vast. You also know. So you need some support. And वो support है ICI classes. ये याद रखो. Okay, that support is ICI classes. Now it is not a time where you will develop your own logic. इतना time नहीं है रे. At that time we had time because my foundation exam is after 1 year. At my scheme was very old scheme. So after 12th standard, our attempt is after 1 year. That is when we were in first year. Okay, so first year ki exam mandatory. Even you pass your foundation, your 12th standard, you cannot give your attempt at that time before 1 year. Okay, after 12th minimum gap is 1 year. Now it's only 3 months. अभी 8 months आएगा new syllabus में, but at that time नहीं था. Okay, so please do. Yes, please listen to all my suggestions. ठीक है. ठीक है. So ये टाइम टेबल फॉलो करो. Now suppose if you have your personal timings for any private classes हो गए आपके for 11 12 standard, then बेटा or your first year BCom, then please do not try to attend it. मतलब मैं 11 12 का नहीं बोल रहा हूँ, first year का, because your almost syllabus will be covered in foundation. Okay, so देखिए करिए अच्छे से. ठीक है, चलो. So I hope कि आपको schedule समझ में आया. So many students they ask me, sir, what should be our schedule? How we can manage our foundation? तो ये आपका मैनेजमेंट है. क्या हुआ? ये क्यों हैंगलो. क्या हुआ रे? एक ही मिनट बेटा. ये क्यों हैंग हो गया बेटा? चलो, लास्ट क्वेश्चन बिफोर ब्रेक. होगी बेटा, इको की क्लास जल्दी शुरू होगी.
चलो illustration 3. Now see what is given in the question. So what is given in the question? Try to understand it. Illustration 3 mark as IMP1. Enter the following transaction in bank and discount column. Checks are first treated as, now this is very important line. Checks are first treated as cash receipt. मतलब चेक जब मिलेगा तो you will pass the entry cash account debit to party and then bank to cash. Understood? बताता हूँ, don't worry. Chandrika commence business with cash. What is the entry? Cash account च्या debitला to Chandrika capital. Cash account debit to Chandrika capital. Understand? Now what are the columns? Date, receipt, LF, discount allowed, cash, bank, date, payment, LF, discount received, cash, bank. So receipt to capital in cash column, 20,000. Yes, sir. Easy. He paid into current account. Current account, bank is a receiver, cash goes out, paid. So किसको बैंक को डेबिट करना है? फर्स्ट राइट इन द बैंक कॉलम, बँकेच्या डेबिटला टू कैश, बैंक के डेबिट में एंड कैश के क्रेडिट में बाय बैंक. यस, 19,000 कैश के क्रेडिट में. एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा का सी. सो यू आर गोइंग टू राइट कॉन्ट्रा का सी on the same line. Contra entry on the same line, you will note down it. Okay, so आप कहां पे लिखोगे? Contra entry on the same line. Understood? Very easy. Doesn't matter. एकदम easy. बैंक के डेबिट में first write down amount column and then write down, बेटा amount लिखो पहले and then write down to cash and by bank. Okay, it will be a easy technique. चलो, he received check from Kirti on account. चेक रिसीव, सर एंट्री बोला था जब भी चेक रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति. सो इट्स देयर पॉलिसी. सर नॉर्मली व्हेन चेक रिसीव वी पास एंट्री बैंक टू कीर्ति, बट हियर इज गिवन स्पेसिफिकली इन द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि चेक रिसीव हुआ तो पहले कैश रिसीट ट्रीट करो. सर मैंने नहीं बताया, आईसीआई ने बताया है. सर इफ दिस सेंटेंस इज नॉट गिवन, ये सेंटेंस मिसिंग होता. इफ दिस सेंटेंस इज नॉट गिवन, योर एंट्री विल बी बैंक टू कीर्ति. नाउ अंडरस्टूड? सो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश टू कीर्ति. कैश टू कीर्ति, फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट 600. and now you paid that check into bank. So बँकेच्या डेबिटला to cash. Now bank to cash. Write down this entry. IMP 4 तारीख और 7 तारीख IMP. Mark it as IMP. So बँकेच्या डेबिटला to cash 600 बैंक के डेबिट में आएगा एंड कैश के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक. कॉन्ट्रा सेम लाइन पे लिखना था, ये सेम लाइन पे, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, सेम लाइन पे लिखना था, इधर नीचे. नाउ दिस इज आईएमपी. हाँ, ये थोड़ा सा अलग था. ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक. सो रिसीट इज ट्रीटेड एज, बेटा रिसीट को हमने ये ट्रीट किया है. चेक आर ट्रीटेड एज कैश रिसीट, बट पेमेंट बेटा डायरेक्टली. रतन बाय चेक मतलब रतन अकाउंट डेबिट टू बैंक 330 and 20 discount received. So directly Ratan to bank. So by Ratan and company in discount bank column 330
एंड डिस्काउंट कॉलम में 20. ओके, सो हियर डायरेक्टली, यस, दिस इज थ्रू कैश एंड दिस इज डायरेक्टली. Understood the entry? Easy che. Tripathi and company pays into his bank. Now they paid directly in the bank. They have not given check to me. They have directly given. So either likho directly. Directly. So entry will be bank account debit. Bank balance बढ़ गया ना. Bank account debit to Tripathi. Bankecha debit la to Tripathi. So bank के debit में to Tripathi. In bank column 475. In which column? Bank column. Understood? Simple che. You can write it afterwards. Very good. Now he received check. So 15 की entry IMP. Now you only tell me. Received check from Varshi and allows him discount 35. Varshi से check received हुआ and allowed him discount 35. चलो 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 बताओ जल्दी से क्या एंट्री करोगे. चलो ही रिसीव्ड चेक, क्या एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे. यस, कैश टू वार्षी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वार्षी. ओके, ट्रीट इट एज कैश अकाउंट. सो बाय सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू वार्षी, कैश के डेबिट में टू वार्षी, 415 कैश कॉलम, 35 इन डिस्काउंट कॉलम. फर्स्ट ट्रीट इट एज कैश. पहले उसको कैश ट्रीट करो. He receives 75 cash and check rupees 100 for cash sale. क्या एंट्री करेंगे. टू सेल्स कैश अकाउंट. दोनों भी कैश टू कैश सेल्स. IMP, not cash account debit, bank account debit to sales. Normally sir check received हुआ तो cash account debit, bank account debit to sales. But what is the policy? When we received check, we record in cash account. So cash account debit 175 IMP. And now we deposited check. So deposit check मतलब बैंक के चा debit ला to cash. So बैंक के debit में and cash के credit में. देखो बैंक कॉलम के इसमें आएगा 1000, 1000 and cash के credit में आएगा 1000. Contra, he pays for purchases. Purchases 275 and purchases to cash. And he pays for sundry expense in cash. By sundry expense 50. Now we are going to close this account. Don't balance. And balancing figure, by balance carried down. Remember, I think this account is getting tallied. नहीं, ये भी नहीं tally हुआ. This is 300. ये 300 लिखना रहेगा. So this is very important question. I will show you the index. Index बता देता हूँ. So what is new? When check is received, उसको treat करना है cash. IMP transactions are given. Take a screenshot. Contra on the same line. ना ये contra same line पे लिखना है. Contra नीचे लिखना था. On the same line. ठीक है, अभी नहीं लिखा तो नहीं लिखा है क्योंकि जगह नहीं होती है पीपीडी में. यू आर फाइंडिंग इट सिंपल. से यस और नो. एक न्यू एडजस्टमेंट है. इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ये किया रहता. मिस्टर विशाल जी, अभी स्टडी पे ही फोकस कीजिए. स्टार्टअप का आप लोगों को बाद में समझ में आएगा व्हेन यू विल बी इन सीए फाइनल. इट्स गुड. टाइम मिला तो देखिए, बट टाइम नहीं है अपने पास. इंडेक्स दे दूं? इंडेक्स दे दूं क्या आपको? इंडेक्स, चलो इंडेक्स देख लो.
इंडेक्स देखो बेटा, पहला क्वेश्चन सिंपल कैश बुक, rent due is not recorded in cash book. All IMP points are given. Number two, double column cash book. Don't balance discount column. Debit is discount allowed and credit is discount received. It's a loss. It's a gain. Receipt, cash received की एक एंट्री होगी, चेक रिसीव्ड की दो एंट्रीज होंगी, कैश टू बैंक, ओके, चेक रिसीव्ड की एंट्री होगी, कैश टू पार्टी, सॉरी इधर गलत हुआ है, कैश टू पार्टी एंड देन बैंक टू कैश। पेमेंट का एक ही एंट्री होगा, कैश पेड, और पेमेंट थ्रू बैंक का भी एक ही एंट्री होगा। सो व्हाट इज न्यू इन दिस? चेक रिसीव्ड इज रेड पेन। ओके, सो चेक रिसीव्ड, फर्स्ट कैश टू पार्टी एंड देन बैंक टू कैश, कैश कैश कॉलम गॉन। यस, नाउ दिस इज गिवन बाय आईसीआई। ओके, चलो और कुछ शक या सवाल? यस बेटा, सब्सिडी का इंडेक्स आफ्टर ब्रेक, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ कैश बुक और सब्सिडरी बुक का इंडेक्स आफ्टर ब्रेक। सो ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए।
Welcome back once again. Now next question is illustration number 4. Very interesting question. Illu 4. Chalo. Try to understand. Prepare a petty cash book on impressed system from the following. Impressed system, I already told you it in the last session. When we maintain petty cash book, it does not have like receipt and payment pro forma. We have different heads for petty cash book, and we prepare petty cash book in a different way. It's not regular ledger account. And this system is called as impressed system of accounting. Understood the logic? It's not T format. It has different columns of payment. तो हम लोग उसको बोलते पेटी कैश बुक. चलो, let's come to question number 4. If you have any query, you can ask me at the end. चलिए, received ₹100. Yes, received ₹100 for petty cash. एक ही मिनट हाँ बेटा. Now see how we are going to maintain petty cash. What are the columns? Receipt, date, particulars, total, then one by one beta, expenses we are going to note down. ठीक है, one by one expenses. Received ₹100 for petty cash. So received means here you can check. Received ₹100 January 1 to cash on the receipt side. Petty cash account debit to cash. What is the ledger? So this is like tally. Tally में ledgers ऐसे ही दिखते हैं. Petty cash to cash. Okay. Next. Paid bus fare. अभी बस फेयर हमने किसको कौन से हेड में ऐड किया? Conveyance. So you will open first column conveyance account. So conveyance is a first column. Payment side you have different columns. Conveyance is a first column. Total 0.5 and 0.5 you will write it in the conveyance column. Now bus fare and cartage are two different things. Cartage is for goods. Cartage और fare में क्या difference है? Bus fare it might be for passengers or your employees, and cartage is for goods purchase sales के लिए जो pay करते हो is cartage. So this is a second head. Cartage is a second head. So by cartage 2.5, and in cartage column you are going to write 2.5. Easy che? Third one, paid for postage and telegram. Third, postage and telegram. By postage and telegram total में 5, and you will open third column, that is postage and telegram. Next, paid wages for casual workers. Fourth column, wages. So fourth column, wages, you are going to write by wages ₹6 in total column and wages column. Simple hai? Easy hai? Okay. So you can do by your own na? Easy hai na ekdam? Paid for stationery. Stationery, new head, stationery account. Fifth one, stationery, by stationery, ₹4. ₹4. Stationery, stationery. Paid Tonga charges. बेटा टोंगा चार्जेस इज कन्वेंस. बस फेयर कैसे होता है? तो आप लोग, अरे वो घोड़ा गाड़ी रे आपकी, तो बाय कन्वेंस पैसेंजर
या एम्प्लॉइज उनके लिए होगा। सो ये कौन से हेड में डालोगे? नंबर 1 में, पेड फॉर रिपेयर्स। अभी आईसीआई ने ये डाला सन्ड्रीज में। If you don't want to put it in sundries, you can open repairs account. Okay, sundry में रखो, नहीं तो repairs account में रखो, because this is not recurring expenses. ये बार बार नहीं आने वाला है। repairs of furniture, it is one time normally, मतलब not recurring. It is expenditure, but it is a sundry expense. Why? Because this is not recurring in nature. Okay, so ये छोटा खर्चा है which is not recurring in nature. So ICI put it in study material. We have done it in the sundries column, where we put this sundries column, IMP. IMP sundries में डाल दिया। बस फेयर कौन सा कॉलम था? फर्स्ट वन, कन्वेंस, कन्वेंस कॉलम। कार्टेज सेकंड वन, postage and telegram third one, tonga charges again conveyance 1, cartage 2, stationery 5, and refreshment to customer. It is not recurring account, so again we will put this in sundries column. Where to put this? In sundries column, IMP. And we have done with this question. Very simple. Yes or no? Easy che? Yes beta, these columns are going to change as per question. Question to question आप लोग इसको बदल सकते हो. If you write instead of sundries repairs column 6 and 7 column refreshment is okay. Refreshment of customer, you can open that account also. Okay. Now you will take a total of all this. Expenses का total, receipt का total is 100 and balancing figure is rupees 40. Balancing figure क्या है? Balancing figure is rupees 40. Easy है क्या? कन्वेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? कन्वेंस का मीनिंग आप गूगल करोगे तो जो आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंस. ओके? अरे बेटा बोला ना तुम्हें सुजोय, घोड़ा गाड़ी बेटा पुराने जमाने का कन्वेंस का ही पार्ट है. और कोई शक या सवाल? कार्टेज ये गुड्स का होता है और एम्प्लॉइज को जो देना पड़ता है वो कन्वेंस देना पड़ता है. आर्टिकलशिप पीरियड में आप जब ट्रैवलिंग करोगे तो फर्म से पैसा मिलता है आपको कन्वेंस का. बेटा साक्षी, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये डिफर कर सकता है. इलस्ट्रेशन 5. नाउ बेटा वन क्वेरी वी गॉट, हम लोग सभी प्रॉब्लम्स क्लास में नहीं ले सकते हैं. ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि हर प्रॉब्लम क्लास में लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सपोज इफ एनी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट इज देयर तो वी कैन टेक इट इन दी क्लास. But beta, if you ask me to solve each and every question, तो what is the timing given by allotted by ICI? तो हमारे पास भी बेटा उनको भी ये देखो, मैं वापस से बोलता हूँ, they also have pressure to finish it within 3.5 months to 4 months. तो क्लासेस हमें 4 months में कंप्लीट करने होते हैं. और आप लोगों को भी पता है, इफ वी टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास तो आप लास्ट के प्रॉब्लम्स इन एनी, आई वोंट से बट इन मेनी क्लासेस ये होता है कि लास्ट के टॉपिक भगाए जाएंगे. सो आईसीआई के जो क्लासेस है उसमें स्टार्टिंग से हम लोग स्लोली ही, ऐसा है नहीं है कि एकदम स्लो जाएंगे या एकदम फास्ट जाएंगे. वी टेक ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेम एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद बेटा बाकी यूर वर्क है. रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर हो सकता है तो यू कैन ओपन दैट रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर लेजर अकाउंट. ओके, तो यस दीपांशु, देखते हैं, जल्दी ही शुरू करेंगे.
अभी आप लोग कॉलम्स जो है वो आईसीआई ने कौन से लिए हैं उसको नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड टीवाई के वन यू सॉल्व बाय योर ओन। मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूं, अभी लास्ट का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5, सो वी विल टेक दैट क्वेश्चन। कार्टेज मतलब गुड्स के लिए जो जो आप बोलते हो ना बेटा, हमारी लोकल पैसेंजर होती है, और एक जो मालवाहू गाड़ी होती है बेटा, कि जो आपका पूरा जो दो ट्रेन से, एक गुड्स कैरी करने वाली और एक पैसेंजर्स कैरी करने वाली, मतलब इंसान को कैरी करने वाले और गुड्स को कैरी करने वाले, जो गुड्स को कैरी करते हैं उसको हम लोग कार्टेज करके बुलाते हैं, वो खर्चे को। और जो बेटा एम्प्लॉयज को कैरी करेंगे, जहां पे आप लोग बस में जा रहे हो, तो उसको कन्वेंस करके बोला जाएगा। ये उसका डिफरेंस है। अभी मैंने 3 बार तो भी बताया ये डिफरेंस, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी इट अगेन एंड अगेन। इट्स वेरी इरिटेटिंग। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब जो खर्चा एक आध दूसरी बार आएगा, वो खर्चे को आप लोग सन्ड्री एक्सपेंस में डाल सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू पुट इट इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, यू कैन ओपन दैट अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट सेपरेटली, इफ यू डोंट वांट टू पुट इट इन सन्ड्रीज। ठीक है, मैं भी एग्जाम में रहूंगा तो आई विल ओपन रिपेयर्स अकाउंट एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ सन्ड्रीज। ओके, सेम क्वेश्चन आया तो सन्ड्री ओपन कर दूंगा, नहीं पता चला तो आई विल ओपन दैट स्पेसिफिक अकाउंट। और कुछ क्वेश्चंस? चलो अभी फिर आगे बढ़ने दो मुझे। तनिषा इज टेलिंग मी कि सर आर यू, यस, आर यू फाइन, यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड। बेटा आवाज गया है मेरा, 2 दिन से बातें बहुत लेक्चर्स हुए बैक टू बैक पिछले वीक में, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। यस बेटा जीत, बेस्ट ऑफ लक। चलो, ओके, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड बैंक कॉलम्स। कैश इन हैंड कहां पे रिकॉर्ड, अभी ये सभी कॉलम्स हैं, यू हैव टू ओपन ऑल कॉलम्स। सो कैश इन हैंड, in cash account, two balance brought down. Yes, two balance brought down in cash account. Color बदल देता हूं। Two balance brought down 15,000. OD, now write down OD IMP. OD has credit balance. OD मतलब loan, short term loan. What is OD? Overdraft. Overdraft is short term loan taken from the bank. Okay, so OD का meaning लिख दो, short term loan, and it's a credit balance. Buy balance brought down 500. Now this is also checks are first treated as cash receipt. Cash sales. So cash के debit में 3,000 to sales receipt है. Paid to सुशील brothers by check. चेक से पे किया, सो बाय बैंक में से पे किया है, सो सुशील सॉरी सुशील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुशील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो बैंक के क्रेडिट साइड में बाय सुशील ब्रदर्स, बैंक कॉलम में 3,400 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट कॉलम में 100। सेम क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। अभी क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आईएमपी एंट्री, व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यू हैव नॉट रिसीव्ड चेक। क्रेडिट कार्ड की एंट्री डायरेक्टली बैंक टू सेल्स, आईएमपी, मार्क एज आईएमपी, बैंक टू सेल्स। इजी? यस। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन, सृजन से चेक रिसीव्ड हुआ, नाउ यू विल ट्रीट इट एज कैश रिसीट, write down in bracket, treat as cash receipt. Okay, so cash to Srijan.
6,200. And now endorse Srijan's check in favor of Adit. IMP 6,200 का चेक किसको दे दिया? आदित्य को. नाउ सी बेटा, सी entry is Adit account debit to cash account because you treat it as cash receipt. So treat as cash payment. IMP. Okay, भले you paid check, but you should not. Normal entry क्या होती है? Adit to bank, but it's wrong. आदित्य टू बैंक क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज व्हेन वी रिसीव्ड चेक वी पास इट एज कैश टू सृजन. सो चेक दिया, किसी को एंडोर्स किया, तो वी विल पास एंट्री आदित्य टू कैश. नॉर्मली आदित्य टू बैंक, but here you will treat it as Adit to cash. What you will treat it as? Adit to cash. IMP entry. IMP entry. Very, very important. Very, very important. Endorse region check in favor of Adit is very important. Deposit into bank. So बैंक के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. कैश के क्रेडिट में 6,800 and bank cash goes out. बैंक के डेबिट में, सॉरी, बैंक के डेबिट में 6,800 and कैश के क्रेडिट में 6,800. So to cash and by bank. Contra CC, contra का C. Next, received a check from Aviral and deposited the same into bank by allowing discount. So received a check and immediately deposited same into bank. ठीक है, very important. So first कैश टू अविरल. अभी आईसीआई ने ऐसा नहीं किया. आईसीआई ने आई थिंक डायरेक्टली बैंक में डाल दिया है क्योंकि सेम डे पे किया है. सो आईसीआई ने ये सेम डे पे किया, इसलिए आईसीआई ने क्या किया है? यस, मैं मुझे पूछोगे तो आई विल पास एंट्री कैश टू अविरल एंड बैंक टू कैश. ओके, बट आईसीआई ने क्या किया? मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में, स्टडी मैट में क्या किया हुआ है? हियर it's my personal view, इधर डायरेक्टली बैंक टू अविरल किया because on the same day है. So you can pass on same day. Both views are correct. Cash to aviral and bank to cash, or you can directly pass entry bank to aviral because it is deposited on the same day. Okay, so same day पे deposit किया तो you will pass entry cash to bank to aviral directly. So ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने तो ये 3,650 and then बेटा I deposited in the bank. So 10th को to cash and by bank लिखा है. 12th, Adit informed Srijan's check is dishonor and now cash is received from Srijan and amount paid to Adit through own check. Okay, IMP. Adit ने inform किया check dishonor. So what is the entry for check dishonor? Check dishonor की entry क्या होगी? Yes, very, very important entry. Srijan account debit. Srijan is our debtor and we have to pay to Adit. Adit is our creditor because check is not our check. Check अपना नहीं है. तो Srijan to Adit. फर्स्ट एंट्री डेटर क्रेडिटर. चेक डिसऑनर की एंट्री. ये डिसऑनर इज नॉट आर चेक. हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्क एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
तो पहली एंट्री होगी सृजन टू आदित्य, दूसरी एंट्री होगी कैश टू सृजन, एंड तीसरी एंट्री होगी आदित्य टू बैंक। तीन एंट्रीज। अभी इसकी एंट्री नहीं होने वाली है, इसकी एंट्री नहीं होगी, कैश टू सृजन एंड आदित्य टू बैंक। इजी छे, एकदम इजी। 6,200। सो कैश टू सृजन एंड आदित्य टू बैंक। बैंक कॉलम में आदित्य लिखेंगे, बाय आदित्य इन बैंक कॉलम। वेरी वेरी एंट्री। ऑल आईएमपी एंट्रीज आई हैव नोटेड इट। आईएमपी एंट्रीज को रिकॉल करो आफ्टर द क्लास। ऑल आईएमपी एंट्रीज टुगेदर। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक टू सेल्स। विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, कैश को डेबिट, कैश को डेबिट 1800, बैंक को क्रेडिट 1800। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, then now this is very important, 28 and 30। 28 nahi, paid Sanchit by check, so Sanchit to bank by Sanchit। and very very important entry, bank charge commission on all debit and credit card का sales। अभी sales कितना है डेबिट क्रेडिट कार्ड का? so डेबिट कार्ड का सेल्स, डेबिट कार्ड का सेल्स 1 नहीं, कैश सेल्स पेड टू सुशील नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 1% ऑफ 2,800, रिसीव्ड चेक, एंडोर्स, डिपॉजिट रिसीव्ड आदित्य, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड 3,200। सो 2,800 प्लस 3,200, 1% is 60 rupees। so 60 rupees is your payment by commission, is also IMP। commission मतलब payment 60 rupees, and then don't balance discount column, balance only balance carried down। now how to revise it? now see, overdraft, overdraft है तो credit balance है, recalled। sales through credit card, credit card मतलब bank to sales, second important entry। received check from सृजन, cash to सृजन एंड एंडोर्स चेक, एंडोर्स किया तो आदित्य टू कैश, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, नॉट आदित्य टू बैंक जब हम लोग चेक दे रहे। देन आदित्य ने हमें इन्फॉर्म किया चेक डिसऑनर, सो सृजन टू आदित्य, नो एंट्री बिकॉज कैश बुक में नहीं आएगा। सेकंड एंट्री कैश टू सृजन, he has given us cash and we paid it through check, so last entry will be आदित्य टू बैंक। देन कमीशन की एंट्री, कमीशन एक्सपेंसेस टू बैंक, खत्म है। over, done, over, over, over। इजी था। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। हैव पेशेंस, पेशेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज ये पूरा होमवर्क करना है आपको। साक्षी, टीवाईके का फर्स्ट सम का फॉर्मेट अलग है बोल रही है। यस, यू कैन हैव सेम प्रोफॉर्मा। अभी आईसीआई ने थोड़ा इधर रुपीज ले लिया एंड देन पेमेंट साइड इधर लिया, ओके थोड़ा सा अलग है। यू कैन मेंटेन बोथ प्रोफॉर्माज, ओके रिसीट डेट, और यू कैन टेक डेट and then receipt and then amount, okay, so both are correct बेटा। you can maintain two proformas। आप TYK1 का भी प्रोफॉर्मा ले सकते हो या इसका भी प्रोफॉर्मा ले सकते हो, इलू 4 का, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रोफॉर्मा यूज कर सकते हो। ठीक है साक्षी? सौरव पूछ रहा है सर, चेक डिसऑनर की एंट्री। बेटा वेरी सिंपल लॉजिक, आदित्य से पैसा आने वाला है, सॉरी सृजन टू आदित्य रे, आदित्य टू सृजन किया मैंने, सृजन टू आदित्य किया ना बेटा। सृजन से पैसा आएगा और किसको पैसा देना है? आदित्य को। ओके, वी हैव टू पे टू आदित्य ना बेटा। सो सृजन इज अवर डेटर and Adit is our creditor. We open both accounts, but here it is cash book, so no journal entry in cash book. So cash book में नहीं आएगा, it will be in journal proper. We will pass entry only for cash and payment of check. सौरव तेरी एंट्री गलत है, सृजन टू आदित होगी। चलो, नहीं बेटा तिवारी जी, आज नहीं। चलो अभी एक जल्दी से मैं अभी आपको एक बड़ा चैप्टर का थ्योरी बताने वाला हूं। नाउ वी लेफ्ट विथ 25 मिनट्स है हमारे पास, 25 मिनट्स, लास्ट लास्ट लास्ट। हैव पेशेंस। बाय क्यों बोला रे? कौन बोलता है बाय? 1:30 मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी, नो बाय बाय वगैरह। हाँ चलो, सो वी हैव फिनिश विथ ये सब्सिडी बुक्स के सभी क्वेश्चंस हो गए ना? सब्सिडी बुक्स का ऑल इलस्ट्रेशंस डन ना? 3 इज इजी, सेल्स बुक में इजी है। 4th इज ऑल्सो इजी, रिटर्न इनवर्ड बुक and return outward book. Now you can do by your own. राजेंद्र प्रकाश एवरी टाइम ना, डे वाइज एंड मंथ एंड पे कौन सा ओपन होगा? रिटर्न आउटवर्ड। सो इधर लिख के रखो डे वाइज, मॉडर्न इलेक्ट्रिकल डे वाइज एंड मंथ एंड, मंथ एंड। रिटर्न आउटवर्ड को कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट प्लस परचेस रिटर्न, क्रेडिट प्लस, इट्स वेरी सिंपल। And same question here, purchase return book, date, debit note, supplier and amount. It's very simple. Debit note कब आता है? Purchase return DP, debit note, and credit note for sales return. So debit note है देखो इधर, debit notes. Simple छे? Yes. Subsidiary books कर लेना। और कुछ क्वेरीज होंगी तो बताओ, बस मेरे साइड से क्वेरीज खत्म है। वेरी गुड बेटा जानवी। चलो मैं अभी आपको एक यूनिट बता रहा हूं, प्लीज कम टू यूनिट 2 थ्योरी। Yes, this is your unit number 2 of first chapter, very important chapter. I think we cannot finish it today. हाँ हाँ हाँ, सब्सिडरी बुक का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है बेटा, ले लो सब्सिडरी बुक का स्क्रीनशॉट, सब्सिडरी बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ले लो। एग्जाम कॉपी में यू कैन यूज 2 पेजेस। सक्षम, गुड क्वेश्चन। पेटी कैश बुक का कैसे करेंगे सर? इन एग्जाम यू कैन हैव, यस, सब्सिडरी बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब्सिडरी बुक का स्क्रीनशॉट, you can take it on 2 pages. फॉर्मेट यू कैन यूज ऑफ स्टडी मटेरियल बेटा, स्टडी मटेरियल का ही आपके टीवाई के क्वेश्चंस का फॉर्मेट में बी डिफरेंट, आई सेज गिवन यू, बट यू कैन फॉलो दैट प्रोफॉर्मा और अवर इलस्ट्रेशन प्रोफॉर्मा, बोथ आर करेक्ट। तो टीवाई के में जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, आईसे ने अलग प्रोफॉर्मा दिया है। स्नेहा गुप्ता बोल रहे कि सर 140 तक लेक्चर लो। नहीं बेटा ठीक है, 130 तक। एक लास्ट की थ्योरी देख लो अभी। यस, नाउ लास्ट 20 मिनट्स, आई नीड यूर ओनली 20 मिनट्स। चलो चलो चलो, फास्ट फास्ट बेटा। सी,
Now I think you can understand it very well. Accounting concepts, principles, and conventions. See, now what is the topic? Why this unit is needed? And sir, why you have taken this unit so late? Because you first should be aware of the concept of accrual. You should know the business, what is the entry, what are transactions, and now you can see this chapter very simple. तो अभी accounting concept क्या है? So for you, the meaning of concept should be same for me also. Okay, जो आपके लिए concept है वही concept का meaning मेरे लिए भी होगा. What are principles for you? That same principles I should follow as a businessman. So though our business nature are different, but accounting approach should be same, and therefore we have this chapter which is called as concepts, principles, and conventions. A situation where a proprietor and you take copies of your books of accounts, means you and your proprietor, you are a chartered accountant, and 5 different accountants will give you different approaches. Okay, after few days, financial statements of 5 accountants have different amounts. 5 accountants, 5 different amounts, and therefore generally accepted set of rules must be developed. So your accounting should match with my accounting. My knowledge will be same as your knowledge, and then only we can match our books of accounts. Otherwise, you treated it as a capital expenditure. I treated it as a revenue expenditure. So it should be on the same platform. Accounting is a language of business. Financial statements are communicate financial information to various users. So already unit 1 में cover हुआ था. Financial statements prepared by different organization should be prepared on uniform basis. So financial statements, different organization, how you have to read your theory, ये आज मैं आपको बता रहा हूं. So financial statements for different organizations, uniform basis. And there should be consistency over a period, year after year. So see the new 2 words, one is uniform and second one is consistency. So 2 words are there, uniform and consistency. To avoid the confusion, we have generally accepted accounting principles, which is called as accounting standards also in simple language. Okay, so generally accepted accounting principles. To avoid this confusion, we will have same principles over the period. It's called as generally accepted accounting principles. The term gap is used to describe rules developed for the preparation of financial statements and are also called as principles, concepts, conventions, postulates, etc. And these gaps are backbone of accounting information system. तो इनका ही अलग अलग नाम है, concepts, convention, postulates and principles. अलग अलग नाम है. These principles are grounded on the rules which defines the parameters and constraint. ठीक है, accounting principles are basic norms. रट्टा मार. Accounting principles are basic norms and assumptions on which whole accounting system has been developed. So these are norms and assumptions. ठीक है, norms and assumptions जो overall इंडिया यूज करेगी, ओवरऑल वर्ल्ड यूज करेगा. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब assumptions. So we have to assume something. Now what are assumptions? Means accrual concept. It is assumed. Fundamental assumption is going concern. So assumption matlab kya? Now what is going concern? What is fundamental assumption? That we are going to learn in this chapter. What are assumptions we are making in accounts? ठीक है, हमारा assumption क्या है, हमारा assumption क्या होगा, ये हमें समझ के लेना है ये चैप्टर द्वारा. मुझे पता है थोड़ा थ्योरी है, नींद आने वाला चैप्टर है, बट बेटा 4 मार्क के लिए करना, ओनली फॉर 4 मार्क्स. 4 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट
Now accounting principles. This is selection of principles, conventions or procedures. Okay, so accounting principle matlab selection of your standard is called as principles, and conventions means traditions, is accounting practices adopted by over a period of time. So see, three words are same. Concepts means assumptions, principle means norms that you selected, एंड थर्ड वन इज कन्वेंशंस मतलब ट्रेडिशंस जो हम लोग सालों के साल करते आ रहे हैं. सो कॉन्सेप्ट मतलब क्या? एजम्पशंस. यू कैन राइट इट समवेयर इन योर स्टडी मटेरियल. कॉन्सेप्ट मीन्स एजम्पशन, प्रिंसिपल्स मीन्स स्टैंडर्ड्स, एंड कन्वेंशंस मतलब ट्रेडिशंस, और प्रिंसिपल्स मीन्स पॉलिसीज दैट यू एक्सेप्टेड, standards you accepted. Now one by one. Yes, theory you can read by your own. I will explain you this in very easy way. So अंदर का आप लोग खुद से लिखो. I will explain you one by one concept. Okay. So आज हम लोग minimum 14 concepts है, 12 concepts. I will need 2 minutes for every concept. Okay. Maximum 1 to 2 minutes. Entity. Now what is entity concept? Now all over India mein business and businessman are two different persons. Accounting ke liye business and businessman are two different persons, and we always think from the angle of business. Business and owners are different. For example, business mein cash comes in, owner से cash goes out. संकेत sir introduced cash into business, so संकेत sir के पास से cash goes out and business में cash comes in. So we follow entity concept. So very first entry, cash account debit to SS capital. SS को आपने बोला था creditor है, तो वही he is our liability. Owner is different, SS capital is different, and business is different. So business में cash comes in and संकेत sir से cash goes out. We always think from the angle of business. First concept over. बिजनेस के एंगल से सोचो, नॉट ओनर के एंगल से. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? एवरीथिंग दैट विल बी measured in terms of money can be recorded. Sir, loyalty of customer cannot be recorded. Loyalty, आपका customer, sorry, your employee, I am paying him salary of 15,000, but he is very loyal and therefore I am recording his loyalty. बे उसका बेटा वो मेरे से बहुत वफादार है और वफादारी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो वफादारी रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, या उसका इंटेलिजेंस लेवल पॉसिबल नहीं है. सो जो मनी में मेजर कर पाऊंगा वही मैं रिकॉर्ड करूंगा. सो माय एम्प्लॉइज माय नॉट ही माइट बी एसेट फॉर मी. एसेट क्यों? बिकॉज ही विल लिव इन माय he will be in my company for next 10 years and he is my asset, but beta I cannot record it as an asset because I can't record it in terms of money. I will pay only salary. So salary को record करूंगा, मैं उसके loyalty को record नहीं करूंगा, मैं उसके health को record नहीं कर सकता हूँ, या मैं उसके बुढ़ापे को record नहीं कर सकता हूँ. ओनली जो मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ वही मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ. ओके बेटा, तो इतना याद रखिए. सो आप लोग मनी में जो मेजरमेंट होगा तो लव, ये बाकी चीजें यू वोंट रिकॉर्ड इट इन बैलेंस शीट. यस आई हैव लव विथ माय एम्प्लॉय, नो बेटा. ओके, तो कितना होगा, एसेट कितनी है, नहीं. बिकॉज व्हाई यू कांट रिकॉर्ड इट? बिकॉज इट कैंट बी रिकॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. ओके, चलो. जैसे आप आपके मम्मी पापा का प्यार जो है वो आप कभी उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये काउंटलेस है. ओके, क्योंकि वो हम लोगों को जो भी गिफ्ट्स देंगे वो गिफ्ट उनका एक प्यार है हमारे टूवर्ड्स. तो मनी में हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते गिफ्ट्स को, उनके प्यार को. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में वही रिकॉर्ड होगा जो मनी में रिकॉर्ड होगा. बार्टर एक्सचेंज कैन बी रिकॉर्डेड, मतलब एसेट के बदले में एसेट, बिकॉज यू कैन फाइंड आउट द एसेट वैल्यू. सो बहुत से बच्चों को क्या लगता है, सर बार्टर एक्सचेंज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. नो, बार्टर एक्सचेंज वी रिकॉर्ड इट इन द बुक्स. इफ वी टेक वन एसेट with exchange of another asset, so we can record it. And how to record it? Accounting standard 10, property, plant and equipment. I will explain in that. So money measurement concept में that thing I will record which can be measured in terms of money. Third one, periodicity. Periodicity concept, 1st April to 31st March is year ending date, and up to 31st March we record accrual entries also. So salary we have not paid, but we record all expenses incurred during 1st April to 31st March.
March, and this is called as periodicity. So we record it for one financial year. We record it for one financial year. It's called as periodicity. Accrual, sir already explained. Accrual means incurred, expenditure incurred, and revenue earned is recorded. Revenue earned is recorded. Expenditure paid is not important, or received is not important. So in expenditure paid is not important, income received is not important. While doing accounting we always prefer P&L में क्या जाएगा, expenditure incurred and revenue earned ये जाने वाला है. Sir understood this concept. मैचिंग कॉन्सेप्ट. चलो तो चार कॉन्सेप्ट हो गए, एक बार रिकॉल करते हैं. चार चार कॉन्सेप्ट्स के बाद एनटीडी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस. सर याद हो गया, यू कैन नोट डाउन इट समवेयर. मनी मेजरमेंट, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड. दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. ओके. Periodicity, 1st April to 31st March is our periodicity concept. Accrual, expenditure incurred is recorded, income earned is recorded, but expenditure paid and income received is not your P&L item. Matching concept, in the month of sales, you will record sales commission. Okay, sales जो month में हुआ, for example March महीने में sale हुआ, but you paid selling commission in April. But expenditure recorded in March. एक्सपेंडिचर कब रिकॉर्ड करना है? इन द मंथ ऑफ मार्च. मैचिंग करना है, मैचिंग. सो जिस साल में सेल्स रिकॉर्ड हुआ उसी साल में सेलिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन यू पेड दैट एक्सपेंडिचर. सो इट इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट. सो मैचिंग मतलब क्या? जिस साल में सेल रिकॉर्ड हुआ उसी साल में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैच करना. सर वेरी गुड. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज गोइंग कंसर्न? योर बिजनेस विल बी continue for foreseeable future. You are not going to stop your business, and therefore I record. What is the importance of this? Going concern मतलब मेरा साल बिजनेस सालों के साल चलता रहेगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? बिजनेस को यस हम लोग क्या बुलाते बेटा उसको? यस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस सालों के साल चलता रहेगा सर, एंड देयरफॉर वी रिकॉर्ड अवर लैंड नॉट एट बेटा करंट मार्केट वैल्यू, वी रिकॉर्ड इट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. हमने जिस साल में 10 साल पहले लिया था उस साल में मेरी लैंड की वैल्यू वी रिकॉर्डेड. लैंड वी बॉट इट फॉर 1 crore rupees, and today though value is 10 crores, but we record in the books 1 crore rupees because we are not going to sell our business immediately. Otherwise we follow net realizable value. Now what is net realizable value? You will understand it in the inventory chapter. Okay, selling price. So normally we record asset at cost, but when we are going to sell our business we will record it at net realizable value. इंटर में और अच्छे से समझेगा. कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन है कि वी रिकॉर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. सो गोइंग कंसर्न के ऊपर ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट आया. एंड रियलाइजेशन मतलब व्हाट? रियलाइजेशन मतलब बेचना. जब हम लोग बेचने के वैल्यू पे लिखते हैं तब हम बोलते हैं रियलाइजेशन. एंड रियलाइजेशन कब करते हैं? व्हेन वी आर डूइंग रिवैल्यूएशन. नाउ व्हाट इज रिवैल्यूएशन? इन पार्टनरशिप you are going to understand. So realization concept, when you revalue your assets you are going to follow realization concept. Dual aspect. Every debit has credit. Every debit has credit is a dual aspect concept. Asset is equal to liability plus capital. We have learned in journal entries. कंजर्वेटिज्म बेटा एंटीसिपेटेड लॉसेस. क्या लाइन याद रखना? एंटीसिपेटेड लॉस आर रिकॉर्डेड. मींस आई एम गोइंग टू बेटा इनकर सम बैड डेट्स का प्रोविजन, वी रिकॉर्ड इट नाउ. ओके, बट एंटीसिपेटेड गेन्स आर नेवर रिकॉर्डेड. कि मैं किसी का पैसा डुबाने वाला हूं उसकी एंट्री आज करके रखना, नॉट अलाउड सर. एंटीसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड एंड एंटीसिपेटेड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. इसी को हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. तो ये वर्ड याद रखना, बहुत जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. एंटीसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड बट नॉट एंटीसिपेटेड गेन्स.
Consistency. Once policy is adopted, we will follow it consistently. For example, first in, first out, you will understand it in the inventory valuation. Once policy is accepted, you have to follow it consistently, and you can change it if required by accounting standard, if required by law, and for better presentation. Accounting standard को जरूरी है या law में जरूरी है या better presentation. I know this is theory, but बेटा 4 marks का क्वेश्चन आएगा. Materiality means what? For example, pencil, pens, expenditure. Beta, pen you are using from last 3 years, so you should record it as an asset. But beta, it amount is very immaterial. Immaterial means not important. Important matlab material, and not important, not very important, so you will record it as expenses. So as an accountant, you have to identify whether this transaction is material. Material होगा तो asset में record करना, immaterial होगा तो expenditure out करना. So this is called as materiality. We have completed all 12 concepts and conventions. Part of the chapter is over. Part of the chapter is remaining, that we will cover it in the next session. This is a theory session. So आपको ये पूरा अच्छे से रीड करना है from your study material. देखो एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब एक बार फटाफट बताता हूँ, ये 5 मिनट का रिकॉर्डिंग सुन लेना लास्ट में एग्जाम को जाने के पहले. एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स. वी हैव टू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यू कैन राइट इट इन योर ओन वे. Medium of exchange is money, and only transaction which can be measured in terms of money will be recorded. Transaction which can be measured in terms of money will be recorded. Employee health, employee loyalty will not be recorded. Then periodicity concept. Periodicity concept matlab where accounting period starts and ends is called as periodicity concept. 1st April to 31st March in India. Accrual concept, expenditure which are incurred or income which are earned is important. Expenditure paid or received is not important. Income received is not important. Matching concept, जो expenditure should match with your revenue. So sales जिस साल में record करोगे उसी साल में in same year you will record selling expenses, though payment is made in the next year. Going concern concept, business will continue for the foreseeable future, and remember your assets and liabilities, therefore we record it at cost. And next concept is cost concept. Realization, we can record it at selling price. It is selling price पे हम लोग जब record करते हैं when we are doing revaluation. तो revaluation मतलब selling price पे record करना. Dual aspect, every debit has a credit, इतना याद रखो. Conservatism, all anticipated losses are recorded, but you never record anticipated gains. And consistency, once policy is accepted, you cannot change it. If it is required, you can change it if required by law, if required by accounting standard, or for better presentation. Materiality, only material items are will be material means which influence the user's decision. Which influence user's decision, you have to record it separately. If it doesn't influence the decision of the user, you can write it as a sundries. आज ही हमने देखा था पेटी एक्सपेंसेस में हमने सन्ड्री कॉलम बनाया. If it does not, it's a छोटा खर्चा रे, छोटा खर्चा you can record it as sundries also. Okay, but बड़ा खर्चा होगा तो you have to give proper heading. Okay, salary, advertisement, you cannot record it as a sundries. Okay, stationery आप पे and l में डालोगे, not recorded as asset. Why? Because of this concept, materiality. I hope you are now 100% clear with the concepts. What is concepts? Yes बेटा, starting में बता दिया था. हाँ, ये भी याद करना. Concepts मतलब क्या? So assumption. So we assume, we follow all these assumptions. Going concern, accrual, consistency. So these are the fundamental assumptions. Principles. Principles matlab policies that you are accepted while doing any entry. That is your policy. So principle assumptions होता है वो concept. Principles होता है जो policy आपने select किया है. And traditions को बोलते हैं conventions. But we can use it interchangeably. तो हम लोग इसको interchangeably use करते हैं. Principles क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एंड कन्वेंशन क्या होगा. इसको हम लोग ऐसे मतलब हालांकि एक टेक्निकल डिफरेंस इज देयर, बट वी कैन नॉट यूज सेपरेट वर्ड्स. वी कॉल इट एज कॉन्सेप्ट्स आल्सो, कन्वेंशंस आल्सो, एंड प्रिंसिपल्स आल्सो. सो देयर इज नो डिफरेंस इन द वर्डिंग्स. So you can interchange the words, but there is one technical difference. Concept matlab assumptions, principles matlab standards, and last one is a convention, is a tradition. I hope you are clear with the concept. कितना भी डिटेल में लूंगा तो भी समझ में नहीं आने वाला है. It's a very boring part of theory, but for one mark के लिए जो lines मैंने बताए, you please note down it. लास्ट के 5 मिनट्स का लेक्चर, लिसन इट केयरफुली एंड यू कैन सी दिस नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा. डोंट वरी, इसके यूनिट 1 के नोट्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो आपको यूनिट 1 2 3 4 5 के, सो आप लोग उसमें से पढ़ लेना. एंड प्लीज हैव वन लाइन
इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम दिस नोट्स, और मैं आगे के सेशन में आपको अगला छोटा सा पार्ट जो बचा है वो बता दूंगा। नेक्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस अ नेक्स्ट सेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी। एग्जाम्पल होमवर्क कंप्लीट करना। टुडे वी हैव कवर्ड लेजर अकाउंट्स, ईयर टू ईयर बेसिस, कैश बुक कवर किया, सब्सिडी बुक्स के क्वेश्चन भी बता दिए इंडेक्स के साथ, एंड टुडे वी हैव फिनिश विद द यूनिट 2। छोटा सा पार्ट बचा है, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो।